In this video, we are going to read about the Unit 16, The Watchman, written by R.K.Narayan. So, here comes the text A. The first paragraph. There was still a faint splash of red on the western horizon. So, a first sentence ro meaning hela माने कौन अबिका क्लाइमेट टा केमती अछि अबिका गोटे स्टिल फेंट स्प्लैश माने अबिका कौन सूर्य उइया को लागिलेनी माने अबिका सिचुएशन टा कौन पूरा संध्या बेले अछि माने संध्या बेले जेंती गोटे रेड स्प्लैश हे जाय स्काई टा पूरा रेड लुक दिए सेटा को पटे अछि वेस्टर्न होराइजन पटे पश्चिम दिग पटे अछि द वॉचमैन स्टूड ऑन द टैंक बर्न एंड टुक अ फाइनल सर्वे सो कौन वॉचमैन जो अच्छी से कौन टैंक रो बंध ऊपर ठिया हेले आउ कौन फाइनल लुक गोटे दबा पे लागिले एरिया ऊपर ऑल द पीपल हु हैड कम फॉर इवनिंग वॉक हैड रिटर्न टू देयर होम्स तो जो लोक माने इवनिंग वॉक करया पे आस्थिले से माने ऑलरेडी पळी सारथिले से जगह ऊपर नॉट अ सोल एनीवेयर केही भी नहांती से जगह ऊपर एक्सेप्ट दैट ऑब्स्टिनेट एंगलर सो से जो दुखी आत्मा भलिया से एंगलर माने कौन जो फिश धरंती निज माने फिशिंग रॉड यूज करके जो माने फिश धरंती से एंगलर ओके एट द नॉर्दर्न एंड से नॉर्थ एंड रे बसथला एंड इट इज हिज एवरीडे वर्क से सब बेले सेठी बसथाय एंटिल मिडनाइट से ता काम करे so who sat with his feet in the water से एंगलर केंती बसथिला ना निज फीट को से वाटर धीरे बुड़ई देथिला सैडली गेजिंग ऑन हिज रॉड और से निज रॉड माने फिशिंग रॉड आड़ को सैडली बहुत दुखी है कि अनौथिला इट वाज नो यूज बॉदरिंग अबाउट हिम सो ता विषय चिंता करिके किछि जायस पड़िबनी कहीं ना ही वुड सिट देयर टिल मिडनाइट होपिंग फॉर अ कैच तो ता रोज रो काम एहा जे से पूरा मिडनाइट जाके बसे सेठी होपिंग फॉर अ कैच चिंता करे आशा करे कि तार जेंती आज गोटे से माछ धरि पारू नेक्स्ट कम्स सो मु रिक्वेस्ट करी कि जो छुआ मैंने पढ़ुचंती बही धरी पढ़े बिकॉज एथरे किछि सेंटेंस मिस्टेक अछि देन द तालुक ऑफिस गॉन्ग स्टक 9 सो द नेक्स्ट पैराग्राफ रे कौन लिखा है द तालुक ऑफिस गॉन्ग स्टक 9 माने गोटे बड़ क्लॉक जहार माने बड़ स्टिक थाए एंड 1 आवर हे साइला परे बहुत लाउड साउंड करे ओके सो 9टा बाजी जाइतला द वॉचमैन वाज सैटिस्फाइड दैट नो trespassing cattle had sneaked in through the wire fencing सो वॉचमैन कोथ पई कि सैटिस्फाइड थिले ना माने जो कैटल्स माने माने गाई हेले गोरु हेले जो माने रोड रे जाउ थांती फेंसिंग जोटा माने वायर रो थाए काठ सहित वायर रो फेंसिंग लागि थाए सेथिरे ना गोटे गोटे कैटल कर गोड़ अटकी जीवो को कुकुर की कहार मुह अटकी जाइथिवो किए बेक लगे देथिवो तो सेई दिन सेंती किछि भी केस नथिला बेली Watchman satisfied thile. Then, as he turned to go, he saw about 100 yards away a shadowy figure moving down the narrow snow steps that led to the water edge. So, कौन हैला जेतबेले से जीवा पई लागिले वॉचमैन जेतबेले जीवा पई लागिले 100 yards दूररू 100 यार्ड डिस्टेंस रो से कौन देखिले कि गोटे शैडोई फिगर माने 100 yards दूर हेलानी ऑफ कोर्स गोटे फिगर ता एते क्लियरली देखा जीवनी तांको गोटे शैडोई फिगर देखा गला कहार ना सी गोटे बहुत ही डार्क फिगर थिला और से आइडेंटिफाई करि पानथले मेल की फीमेल किंतु से देखुथिले कि माने स्टोन स्टेप आड़ को जाउछंती that led to the water edge जोटा माने बड़ गोटे टांकी वाटर एज थिला से आड़ को से जाउछंती he thought for a second that it might be a ghost तो से किछि समय पे भाबिले कि ना ए गोटे घोस्ट रो इमेज हेई पारे then he dismissed the idea and went up to the investigation so सीए कोन कले ना सीए तांकर थॉट को त्याग कर देले कि से घोस्ट थिबो बेली आ इन्वेस्टिगेट करिया पे से स्पॉट को पळेले then what happens if it was anyone came to bed
At this hour, from the top step, he observed that it was a woman's form. So सी कौन भाविले सी जो टॉप स्टेप को पहुंची गले सी देखिले कि एटा गोटे माने वुमेन रो फॉर्म टाए जोटा शैडोई देखा जाउथिला. शी stopped over the last step and placed something on it, possibly a letter. So सी कौन वाटर जो टैंक टा थिला तार टॉप मोस्ट स्टेप रे पहुंची कि सेठी गोटे लेटर टाए थोई देले, प्रोबेबली अ लेटर ताको थोई देले. तापर से टैंक भितर को जीवा पई लागिले. सीए केते तांको नी हाइट जाके वाटर लेवल उठितले सेति पर्यंत गले. तापर प्रे करिया पई लागिथिले. ओके, शी स्टॉप्ड ओवर द लास्ट स्टेप एंड प्लेस समथिंग ऑन इट, possibly a letter. She then stepped into the knee deep water and stood there. तापर knee deep water को जाई सेठी ठिया ही गले. Her hands pressed together in prayer. माने कौन हाथ जोड़ी कि सी ठाकुर को डाकिया पई लागिले. माने जने सुसाइड भी करिया पई जाउ से ठाकुर को डाकुची. Unmistakable signs, always to be followed by the police and gruesome details. Always to be followed by the police and gruesome details, bringing the most worst possible reputation to a tank. तो से टैंक रो रेप्यूटेशन कौन हो जाइतला, से वाटर टैंक रो रेप्यूटेशन पूरा खराब हो जाइतला. बिकॉज जो भी किछि सुइसाइडल केस आसुथिला सबू डाउट करथिले, सबू सस्पेक्ट करथिले. ईच एंड एवरी पर्सन अलोंग विद द पुलिस कौन सस्पेक्ट करथिले कि से टैंक को जाइकी मरथिबे, से टैंक को आगे इन्वेस्टिगेशन होउथिला. सो एज ही इज द वॉचमैन ता ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी रहउथिला. एंड ए झीटा कौन कर से टैंक को जाइए पुणी थे सुइसाइड करने. ओके, ही शाउटेड कम आउट देयर, कम आउट ऑफ इट. तो से वॉचमैन कौन कला, रागी गला जेहेतु से कौन चिल्लेला बाहर को आ, ता भितर जल्दी बाहर को आ. द फॉर्म लुक्ड अप फ्रॉम द वाटर. तो जो फॉर्म टा थिला, जो वुमेन रो फॉर्म टा थिला, से कौन वाटर माने जेहेतु वॉचमैन तले थिला ऊपर को आवाज लगाउथिला, से जो लेडी टा थिला से तळ को अनेले. डोंट स्टैंड एंड डोंट स्टैंड देयर एंड गेज. तो से वॉचमैन कौन करे, से ठिया है कि मते अनानी. यू विल कैच अ कोल्ड, तते ठंडा हो जिवो. कम अप हुएवर यू आर. तो जी भी हे था ना कहीं तू तल को आस ना तते ठंडा धन नब. ही रेस डाउन द स्टेप एंड पिक्ड अप द लेटर. तो सी पूरा से स्टेप पर्यंत गले जो लेटर थुआइतला आ लेटर को उठे देले. He hurriedly lit his lamp and turned its wick till it burns brightly. So कौन है ना, सी जो लंठनटा धरिकी जाइथिले ऊपर को, लंठन रो गोटे विक थाए माने जोटा को टिके ऊंचा कर देले सेटा अधिक ब्राइटली जळे लंठनटा. तो सी सेया गले. तापरे देन हेल्ड इट अप ममरिंग. तापरे से सेटा को माने लिट अप करूचंदी लंठनटा को, ता सहित ममर करचंदी आई डोंट लाइक दिस. तापर कौन है से ऑब्वियसली से जेहेतु से टैंक रो वॉचमैन से ताको गाइड करथिले, एरिया टाको गाइड करूथिले, तो तांको भलो लागेनी जे आसिकी सुइसाइड करे. तो से कहले आई डोंट लाइक दिस, व्हाई इज एवरीवन. से एरिया को पूरा गाइड करथिले, सुपरवाइज करथिले पूरा एरिया टाको. तो सी पूरा चिड़ी जाइथिले कि जे किए भी सुइसाइड करिया पे आछी खाली टैंक को आसुची. देन if you want to be dead, throw yourself under an engine, he said. तो से कौन कहले से झीटा को कि तू जदि एते मरिबार इच्छा ताले निज को इंजिन तले पकई दियो. देन द लाइट फेल अपॉन द अदर्स फेस. तो आउ जन को जो वुमेनली शैडोई फिगर थिले तांको मुह ऊपर कौन लाइट टा जाई पड़ला. इट वाज अ यंग गर्ल वेट विथ टीयर्स. तो वॉचमैन देखिले कि सी गोटे यंग गर्ल, तार फेस टा पूरा टीयर्स रे भर्ती ही जाइछि. ही फेल्ट अ सडन पिटी. तांको पिटी फील हैला तांको दयार भावना आसिला. तापरे ही सेड सिट डाउन एंड रेस्ट. नो अप 2 steps मोर स्टेप्स एंड सिट डाउन. तो से तांको कोन कहले ना तमे
एते कांदनी तुम बसी पड़ आ रेस्ट कर तापर कौन कहले कि किछि स्टेप्स तळु आसिक रेस्ट कर वाटर रो एते क्लोज जाइंकी नुहे डोंट सिट नियर द वाटर शी ओबेड तो से जो यंग गर्ल थिला से तांको ओबे कला ही सैट डाउन ऑन द लास्ट स्टेप बिटवीन हर एंड द वाटर तो कौन से दीटा स्टेप छाड़ी की जेहेतु बसथिला सो से वॉचमैन टा कौन कले ना माने कौन वाटर रो पूरा क्लोज बसले ताकू जगी की ओके वाटर आउ ता मझिरे बसले जेनसे जाई न पारे वाटर को ओके देन प्लेस द लैंटर्न ऑन द स्टेप तो से स्टोन स्टेप ऊपर लैंटर्न टाको थोई देले टुक आउट अ पीस ऑफ टबाको माने टबाको जरटा को काढिले आ ताको पाटी भीतर पुरे देले पुट इट इन हिज माउथ शी बरीड हर फेस इन हर हैंड्स एंड बिगैन टू सोब तो से कौन कला निज मुह माने निज फेस रे हाथ देकी कांदिया पे लागिला ही फेल्ट ट्रबल्ड एंड आस्क्ड तो तांको बहुत चिंता हे गला वॉचमैन को व्हाई डोंट यू राइज एंड गो होम लेडी तो से कौन पचाले तो कहेंगे निज घर को जाऊनु नेक्स्ट कम्स सी स्प्यूटेड थ्रू हर सोप माने कौन से कांदाटा को बंद कर देला आई हैव नो होम इन दिस वर्ल्ड सो से कौन कहला ए संसार रे मोर घर ही नहीं डोंट टेल मी श्योरली यू डोंट ग्रू अप विदाउट अ होम ऑल दिस इयर्स सेड द वॉचमैन सो से कौन कहले मते एमितिका कथा किछि कह नाही मु जानी छी एते वर्ष हेलानी तू जेहेतु एते ग्रोन अप हे गलोनी तू याडे सियाडे बुली की बड़ हे नथिबो तोर पर्टिकुलर किछि घर थिबो ओके देन द गर्ल सेड तो झियो तारो स्टोरी कहया पे लागिला यंग गर्ल आई लॉस्ट माय मदर व्हेन आई वाज 5 इयर्स ओल्ड तो जे से यंग गर्ल कोन कहला सी जतोळे 5 इयर्स ओल्ड रो हेथिला ता मामा मर जाइथिले शी सेड आई थॉट सो तो वॉचमैन कौन कहला कि हाँ मु से भाबुथिली एंड एडेड आउ द सेंटेंस को से ऐड करी कि वॉचमैन कहले एंड योर फादर मैरिड अगेन एंड यू ग्रू अप अंडर द केयर ऑफ योर स्टेप मॉम सो वॉचमैन कौन कहले निश्चित तो बापा आउ गोटे बाहा हेथिबे आउ तू तो स्टेप मॉम को केयर रे तो स्टेप मॉम तो रो देखभाल करूथिबे से एंती कहला देन यस यस हाउ डू यू नो शी आस्क्ड सो से यंग गर्ल कौन कहला हाँ हाँ ए कथाटा सत हेले आपण केमती जानिले सो द वॉचमैन रिप्लाइड आई एम 65 years old she said and asked he said and asked don't your stepmom trouble you so सी जेहेतु कहले आई एम 65 years old ता माने कौन से प्रमाण दउचंती कि मु जेहेतु एते वर्ष रे हे गलेनी मु सोसाइटी विषय नॉलेज अछि कि ए सब जिंस हुए देन ही एडेड अ क्वेश्चन कौन ना डू योर स्टेप मॉम ट्रबल यू तो मो कौन स्टेप मा तुमको किछ हैरान करंती कि नो देयर यू आर रॉन्ग सो से झेटा कौन कहला ना एठी तमे भूल हे गलो द गर्ल सेड शी इज वेरी काइंड टू मी शी हैड बीन लुकिंग आफ्टर मी सिंस माय फादर डाइड अ फ्यू इयर्स अगो तो से झीटा कौन कहला ना ना तुम एठी भूल कहूच मो स्टेप माँ मत बहुत भल पाती से बहुत काइंड नेचर आ मो बापा मरीगला परठू भी से मो उपरे माने मोर भल से जत्न नौचंती शी हैड जस्ट अ लिटिल मनी ऑन हैंड लेफ्ट बाय माय फादर सो मो बापा तांको जेते मनी देइचंदी किछिटा मनी तांको पाखरे बंचीची एंड शी स्पेंड इट ऑन अस सी आम मानक ऊपर से सब पैसा खर्च करुछंदी द वॉचमैन लुक्ड एट द स्टार्स साइट फॉर द डिनर दैट ही वाज मिसिंग सो से कौन वॉचमैन कौन बोरिंग स्टोरी सुनिकी से पूरा हालिया हो जाइथिले आ से स्टार्स गुरा कोन होतले काइना तांको भोक लागुथिला ओके तो से वॉचमैन कौन जेहेतु बहुत भोकिला हो जाइथिले आ डिनर को तांकर मिस करुथिले से कौन कहले इट्स वेरी लेट मैडम गो होम तो कौन से कहले ना बहुत देरी हो गलानी तुम एबे घर को जाओ आई टेल यू आई हैव नो होम शी रिटोर्ट एंग्रीली तो से रागी कहला आई टेल यू आई हैव नो होम मो पाखे घर ही नहीं देन द वॉचमैन सेड योर स्टेप मदर्स हाउस इज ऑल राइट फॉर व्हाट यू से शी इज गुड टू यू तो वॉचमैन कौन कहले कि
तमें जमती कहल इमेजरी देल तुमर स्टेप मदर कर से बहुत भल पर्सन होते तमें पाखक जाओ बट व्हाई शुड आई बी अ बर्डन टू हर हु एम आई तो सी कौन से झीटा कौन कहला कि मु कहीं अन्य जनों ऊपर बोझ हेबी मु किए केमती देन द वॉचमैन सेड यू आर हर हस्बैंड्स डॉटर द वॉचमैन सेड एंड एडेड दैट इज एनफ क्लेम सो एटा एनफ कि तू तांको स्वामी झील दैट इज एनफ प्रूफ आ तू तो घर को जाए नो नो आई वोंट लिव ऑन एनीबॉडीज चैरिटी तो सी कौन कहला मु आउ का दया रे बंचिया पे चाहूनी से झीटा कहला देन यू विल हैव टू वेट टिल दे फाइंड यू हस्बैंड सो से झीटा माने वॉचमैन आउ कौन कहले ना ताले तू अपेक्षा कर जेते पर्यंत से माने तो पई कि हस्बैंड खोजी न देचंती शी ग्लेयर्ड एट हिम इन द डार्क माने से कौन टकमक करके वॉचमैन को अनया पे लगिला देन शी टोल्ड दैट्स व्हाट आई डू नॉट वांट टू डू I want to study and become a doctor and earn my livelihood. I don't want to marry. I often catch. So से कौन कहला से जिनस ही तो मु चाहूनी मु मैरिज करिया पे चाहूनी मु पढ़ी कि गोटे डॉक्टर हवा पे चाहूची से यंग गर्ल कहला आउ निजो लाइवलीहुड माने निजो सोर्स ऑफ इनकम माने डेवलप करिया पे चाहूची ना कि मैरी करिया पे चाहूची I often catch my mother talking far into the night to her eldest son, worrying about my future, about my marriage. I know they couldn't afford to keep me in college very long now. It cost about 20 rupees a month. So कौन हैला ना से यंग गर्ल कहला कि मु मो स्टेप मॉम को प्राय सुनी छी कि से निजो माने राति रे निज बड़ पुओ सहित कथा हुअंती मो मैरिज विषय रे कि माने मोर गोटे अरेंज मैरिज करिवे बेली से कथा हुअंती अकॉर्डिंग टू द यंग गर्ल सो as they cannot afford as her stepmom cannot afford the fee the college fee माने जेहेतु तांको स्टेप मॉम माने से यंग गर्ल रो स्टेप मॉम अफोर्ड करि परिबेनी कॉलेज रो फी से तार मैरिज करिया पे चाहउचंती सो व्हाट इज द कॉलेज फी 20 rupees a month. Then the watchman's expression 20 rupees. The watchman exclaimed. से पूरा आश्चर्य हो गला. It was his monthly salary. The मासकर दरमा होची 20 rupees. How can anyone spend so much for books? कि ये बही पत्र पई 20 rupees monthly salary को invest कर दबो. Till today, she said, I was hoping that I would get a scholarship. तो अबिका पर्यंत कहीं से यंग गर्ल चुप रही थिला बिकॉज से भाबुथिला ताको स्कॉलरशिप पैसा मिलबो बेली दैट वुड हैव सेव्ड मी तो से भाबुथिला स्कॉलरशिप पैसा मिलले से पैसा रे पढिबो बेली बट दिस इवनिंग दे अनाउंस तो दिस इवनिंग कॉलेज कोन अनाउंस करला ना स्कॉलरशिप आउ जणो को मिल जाईची ता जगह रे अदर हैड गॉट इट नॉट आई माय नेम इज नॉट देयर तो ता ना सेठी नाही एंड शी ब्रोक डाउन अगेन ए कथाटा सुन साइला परे कॉलेज रू से भांगी पड़ला द वॉचमैन लुक्ड एट हर इन सरप्राइज से पूरा सरप्राइज है कि से यंग गर्ल को अनेची ही कॉम्प्रिहेंस्ड वेरी लिटिल ऑफ ऑल दिस सिचुएशन शी एडेड सी माने किछि जिंस भाबी हिथला वॉचमैन तापर से झटा आउथरे ऐड कला एंड व्हेन दे came to know about this they will try to arrange my marriage someone is coming and someone is coming to have a look at me tomorrow so से झीटा कौन कहला ना मो मामा अबिका पर्यंत भी ए कथा जानी नहंती कि मते स्कॉलरशिप मिलिबनी और जतबे से जानिबे से मोर मैरिज फिक्स कर देबे एंड काली ही मते गोटे पुओ वाला माने पुओ घर लोक देखिया पई आछंती नो नो शी क्राइड हिस्टेरिकली से कांदिया पे लगिला आई डोंट वांट टू मैरी आई वांट टू स्टडी से कौन कहला मु बाहावा पे चाहूनी मु पढ़िया पे चाहूचे थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो हैव अ नाइस डे अहेड एंड हैप्पी न्यू ईयर